Hello everyone. So today we are going to do Science Fact File 2 Chapter 9, which is about acid and alkalis. So the basic content of this chapter is you must know what are acids, what alkalis are, indicator और acid strength का आपको पता होना चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, हाउ इट हैपन्स, हाउ इट वर्क्स और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के यूजफुल इम्पैक्ट्स आपकी लाइफ में क्या हैं, ये चीज़ें बेसिक जो रिजल्टेंटली पता होना चाहिए आपको आफ्टर डूइंग दिस lecture, after doing this whole chapter. So first of all we start with acid and alkali. So instead of doing both of these topics separately, हम इनको साथ साथ लेकर चलेंगे, कंपैरिजन बेसिस पर करेंगे, इन्हें याद करना भी आसान होगा और समझना भी. So acid or alkali, basically we all know that we are doing this in your science subject. So these are basically the chemicals. So इन दोनों chemicals में difference क्या है कि वो केमिकल जिसे आप सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी ऐसा केमिकल जिसे आप डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में और वो आपको हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, देन दैट इज कंसिडर्ड एज एसिड. और कोई भी ऐसा केमिकल जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर रहा है इन ए सोल्यूशन, देन दैट इज कंसिडर्ड एज alkali. Remember, you must not write it in the way that hydrogen is producing or hydroxide is producing. You have to mention कि यहाँ पर ion produce हो रहे हैं. So that is H positive hydrogen ion in case of acid and OH minus ion in case of alkalis. Then acid और alkali में जो difference है, जब आप उसे measure करते हैं with any instrument, हमारे पास pH मीटर भी होते हैं, हमारे पास pH पेपर भी अवेलेबल हैं. दोनों केसेस में हमारे पास either you are using your pH meter और पेपर, हमारे पास जो pH है उसकी वो less than 7 होती है in case of acid, और 7 से अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है then that is considered as alkali. और अगर किसी चीज़ की pH 7 आ रही है then that is considered as a neutral one. pHP नेगेटिव लॉग को शो करता है. ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, या आप ये कह सकते हैं कि हम किसी भी सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन की तादाद को जब मेजर करते हैं तो उसे हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या pH कंसंट्रेशन कहते हैं. ठीक है. एसिड का टेस्ट सावर, खट्टा टेस्ट होता है, जैसे आपके अचार का है, आपके लेमन का है, ऑरेंज का है. सो दीज ऑल हैव देयर सावर टेस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जिसमें बहुत लाइट एसिड्स या वीक एसिड प्रेजेंट होते हैं. अल्कली का टेस्ट बिटर होता है. देन एसिड जो हैं दे आर स्टिकी टू टच, ऑल्दो वी कैन, जैसे आप लेमन स्क्वीज करते हैं और उसके बाद अगर आप हाथ नहीं धोते हैं तो आपके हाथ जो है वो स्टिकी हो जाते हैं. एंड अल्कली जो हैं वो सोपी टू टच हैं, लाइक योर सोप. आपका सोप कितना स्लिपरी सा और इस तरह से होता है, सो दे आर सोपी टू टच. और आपकी जो सोप हैं, जितने भी आपके पास कंडीशनर्स हैं, इन सब में ऑल दे कंटेन अल्कली. एसिड की शार्प स्मेल होती है, इट्स लाइक कि आपकी नोज़ बर्न कर रही होती है इनसाइड. और अल्कली की यूजुअली कोई स्मेल नहीं होती. एसिड को पहचानने का, इफ़ यू हैव अ केमिकल फार्मूला एंड यू डोंट नो दैट, आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ कि यार ये एसिड है या बेस, तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इफ़ दैट फार्मूला इज स्टार्टिंग फ्रॉम H then that is an acid, and if the formula is ending with OH then that is an alkali. इसके अलावा एसिड और अल्कली की खासियत ये भी है कि अगर आप इसमें एक इंडिकेटर है, हमारे पास लिटमस इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो उसका कलर चेंज शो करता है, ब्लू टू रेड इन केस ऑफ एसिड, और अल्कली के केस में रेड कलर ब्लू हो जाता है. वी कैन कोट सर्टेन एग्जांपल्स हियर like hydrochloric acid, which is also present in your stomach, nitric acid, sulfuric acid, hydrogen fluoride, carbonic acid. Then in alkali we have sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide. You can quote here multiple other examples with hydroxyl ion. Then if you differentiate them on the basis of their uses, acid को कार बैटरीज में यूज़ किया जाता है. आपके घर में जो UPS की बैटरी है उसके अंदर यूज़ किया जा रहा है. और प्लास्टिक और पेंट इंडस्ट्री है, उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं उसमें बहुत बेसिक रॉ मटेरियल है आपका एसिड. आपके जो फर्टिलाइज़र्स हैं, जो एक्सप्लोसिव्स हैं, नाइट्रिक एसिड बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट है उन फर्टिलाइज़र्स और एक्सप्लोसिव्स का. इसके कंपेयर टू एसिड्स, अगर हम अल्कली को देखें तो अल्कली सोप और सोप पाउडर जो बनते हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. पेपर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. जितने भी हाउस होल्ड ब्लीचेस आप यूज़ करते हैं, कलरिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, उनमें यूज़ हो रहा है. now we are doing the similarities, that what are the similarities between both the chemicals. एक पहली सिमिलरिटी ये कि अगर हम इन्हें डिटर्मिन करना चाहते हैं, वी कैन डिटर्मिन ऑन द बेसिस ऑफ कलर चेंज. हम
लिटमस पेपर यूज़ करें तो दोनों ही लिटमस पेपर में कलर चेंज शो करके हमें अपनी प्रेजेंस के बारे में बता देंगे। दोनों ही वाटर सॉल्युबल हैं। व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर, एसिड अल्कली से रिएक्ट करें या अल्कली एसिड से रिएक्ट करें, दे गिव अस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दे आर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स ये आयंस बनाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ ओनली द केस व्हेन दे आर इन सोल्यूशन फॉर्म। जब ये मोल्टन फॉर्म में है, सोल्यूशन फॉर्म में है। अगर ये सॉलिड फॉर्म में है देन दे आर नॉट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये कोरेसिव होते हैं, ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं, इधर दे आर अल्कली और एसिड फॉर योर स्किन, फॉर द सर्फेसिस, एंड फॉर बोथ वी कैन यूज़ द pH स्केल। दोनों के लिए हम pH मीटर यूज़ करते हैं उनकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। Now, this just picture is showing some of the acid sources in your life. For example, you're taking apple or your milk products, lemon, tomato, they all contain different acids, and these all are very weak acids and we're using in our daily life. Then you understand about the alkaline nature of food, which is very important for you. We also prefer alkaline water. Slightly alkaline water is good for health. So actually there are numerous things which are very apparently not acidic, but they are alkaline when they digest and when they take part in your body's functioning. For example, apple, which is very rich in potassium, and there are other minerals as well present in it, they create an alkalizing impact in your body once it digested. Then lemon juice, which is acidic, and but after digestion it have an alkaline impact. Then grapes, which has an alkalizing effect after it digested because of the minerals which they have. Alkali and alkaline food, that is very very good impact for your health. So apparently these things must not seem that they are alkaline, but they have their impacts. So this is all with the acid and alkali, and later on the other topics we will cover in the different other lectures. Goodbye.